Hello everyone, I welcome you all in today's class. Today's class will be based on exercise 6.1. But before starting this, I would like to mention few points for you. This is the chapter from the geometrical portion, and what I have observed till now, that students they feel that this chapter is quite difficult for them, and that's why what I have done to just make it simple, I have just divided this chapter into two parts. Okay, because if you have observed, okay, in this chapter two things are there. Okay, one is the theoretical part and second is geometrical part. Okay, whenever these two things combine, okay, students they might feel a kind of problem, okay, a kind of trouble to understand the concepts, and they feel that this chapter is quite boring or a kind of tough one. Okay, so that's why I have tried my level best to make this chapter simple or easier for you all, and that's why the my from my perspective what I have done, that we have finished all the theoretical parts means the basic concepts of this chapter. Second is the theorems, okay, which are very important, very important, because these are the name theorems. Okay, most probably are the name theorems, and name theorems are generally asked in the exam. Okay, and it is just for 3 and 4 marks. Okay, so you can't take risk, and that's why what I have done, that we have completed all the theorems in one go. If you have not yet seen, it's my request to you, kindly go and watch the videos, kindly go and note down the theorems, solve it at least thrice. Okay, at least thrice I'm saying, because in one go you can't be able to understand. Okay, in one go it's means you can understand 50%, but to just enhance your knowledge, you need to see it, practice it thrice. Okay, so beginning our exercise 6.1, I hope you have remembered the things which we have learned in the very first classes of this chapter. And the first classes of this chapter was on the very introduction of this chapter, or we can say the easier concept, that is the concept of similar figures. Okay, or similarity, what we can call. Okay, so once again I can just make you understand that similarity means two figures. Now figures will be very strict towards our chapter. Figures means we are talking about two of the triangles. Okay, as the name of chapter is triangle, and we need to understand the concepts of triangles only. So that's why very particular I'm talking about, being very particular I'm talking about. If two triangles are there and both triangles are considered as similar, then we need to check two points in that. First is that both triangles must have same shape. Okay, whenever use this word shape, it means all the angles. Okay, in a triangle there will be three angles, so the corresponding angles of both the triangles should be equal. And second thing is, if the sides of both the triangle, or we can say the corresponding sides of both triangle, are proportional, or we can say are in the same ratio. So these are two very basic things regarding similarity, which you should know and which you should understand. After this, we have seen so many examples in the introduction part, in the activity which we have already performed. And if once again I'm saying, if yet not you have seen all this, please go through once. Okay, go through the videos as well as your book, so that you can understand this concept, and then only you can be able to complete your exercise 6.1. So today I'm not going to write anything. Okay, this is very conceptual exercise, बहुत ही conceptual exercise है. इसमें कुछ भी हम आज लिखने या solve करने वाले नहीं हैं. As you can see, very simple exercise. This is only the thing you need to understand is the concept. Okay, so first question in this is fill in the blanks using correct word given in the brackets. Okay, let me tell you one more thing. CBSE has changed the pattern of examination. Okay, this year, from this year onwards, you will have two
kinds of papers. One is basic and then is standard. Okay, and in that, next thing that they have modified is the pattern of question paper. That means you will be having 1 marks question which cannot be so easy for you. ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा easy नहीं होंगे. easy means बहुत conceptual होंगे. ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बुक से तुरंत उठा के जो भी इसमें लिखा हुआ वो आपको दे दिया. Okay, so the 1 marks questions can be asked for you, but those 1 marks question will just will be like ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन. ओके, आपके जो है ना दिमाग को घुमाने वाले क्वेश्चंस होंगे. क्योंकि यहाँ ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, एंड इन द next to the question, just next to the question, you will get 2 answers. Fine, and out of these 2 you have to choose one, and that will be the answer. But here what I'm trying to say is, you choose the answer. Okay, you write the answer, but along with that you should write the reason, which is not asked over here. यहाँ पर नहीं पूछा गया है, but it is your responsibility, and we can say it's our responsibility to complete the question thoroughly. Okay, to understand the question thoroughly. So you're going to write the question, then the answer. Along with the answer, you have to write the reason why you have chosen the particular answer. So first, fill in the blank says, all circles are congruent or similar. Means congruent and similar are the options, as you can see in your book also. So its answer is similar, obviously, that all circles are similar. But I want the reason why all circles are similar. As right now we have discussed, okay, two figures which are having same angle, or we can say equal angles, and sides proportional. It is whenever we have the figure in which angles and sides are there. But in the case of circle, there is no angle, there is no side. You know it better. Okay, सर्कल के केस में ना कोई एंगल है ना कोई साइड्स है, तब हम कैसे कह सकते हैं कि वो सिमिलर होंगे. तो आपको ये दिमाग लगाना है कि सिमिलर माना क्या होता है. सिमिलर माना होता है एक जैसा दिखना. ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा पर्टिकुलर से हटते हैं और इन जनरल की बात करते हैं, तो सर्किल में क्या एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, सर्किल के बारे में बहुत डीप कंसेप्ट पढ़ा हुआ है. दैट देयर आर 2 थिंग्स रिक्वायर्ड. फर्स्ट इज द सेंटर, सेकेंड इज द रेडियाई. ओके, और द रेडियस ऑफ द सर्किल. ठीक है, इफ यू हैव अ सेंटर एंड यू हैव अ पर्टिकुलर लेंथ, okay, between the center and the circumference, okay, that is known as radius of the circle, then you can draw it easily. Okay, so here what will vary? Here the radius will vary, and varying radius is not a big deal. Okay, if radius is varying, then also the particular circle or the number of circles you're gonna make are equal. Okay, equal means are similar, not equal. Okay, are similar because they seems equal to us. Okay, equal means यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनकी रेडियस इक्वल है, वो एक जैसे दिखते हैं. ठीक है, that's why here you can write the reason that all circles are similar. Reason, only radius will vary in the given circles, but they will लुक सिमिलर. ठीक है, लेकिन वो कैसे होंगे, देखने में हमको सिमिलर ही दिखेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल स्क्वायर्स आर ऑब्वियसली सिमिलर. व्हाई नॉट कॉन्ग्रुएंट? Okay, why not congruent? See, it's same as we have seen in circles. As you know that in squares all angles are of 90 degree. Okay, or 2 squares we have taken, one having side of 4 units, next is you having the side of 3 units. Okay, so here we can see angles will be equal because both will be both squares will have angles 90 degree each. That is equal. First
point that we have for similarity is fulfilled. Okay, second point, sides should be proportional. Okay, so 4 and 3 always will get the same ratio, that is 4:3. So here we can say the squares are similar, not the congruent. But in case, see, this thing should be clear for you. What is difference between congruency and similarity? Can the similar figures congruent or can the congruent figures similar? ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है. क्या सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं और क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर हो सकते हैं? ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, कॉन्ग्रुएंसी इट डिफाइंस दैट व्हेन शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल, मींस आपके एंगल्स भी इक्वल हैं, साइड्स भी इक्वल है, इन दैट केस द शेप्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो कॉन्ग्रुएंट अगर है तो सीधी सी बात है कि उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी क्योंकि वो इक्वल हैं. ठीक है, दे विल हैव द सेम रेशियो, दैट इज 1:1. एंड उनके एंगल्स इक्वल हैं तो वो भी हमको चाहिए. दैट मीन्स ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ये आपको 1 मार्क्स में कंसेप्चुअली पूछा जा सकता है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. ठीक है, देखिए आप ये ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं. ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, write true or false with the reason. Okay, give reason for that or give reason for your answer. So you can write the congruent figures are similar, okay, but similar figures are not congruent. Okay, and you can explain on the basis of both the points. Then your question third means part third, all the blank and then triangles are similar. Two options are there, isosceles and equilateral. So obviously isosceles triangle we will not take, because you know that in isosceles triangle two sides are equal but third side is varying, and there is nothing to discuss much about this. Equilateral triangle, all angles are of 60 degree and sides can vary, so no issue, because all sides means in a single triangle all sides are equal, and that's why it is known as equilateral triangle. So if it is if one is having 2 units and next is having 3 units, so it will be 2:3, and quite easy for you to understand that yes, all the equilateral triangles are similar but not the isosceles triangle. You can write the reason. If you're not, see, one more thing, if you're not having any reason, you can write the examples there. ठीक है, अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है और आपको वर्ड्स में लिखना नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पर रीजन की जगह पर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, आप फिगर बना सकते हो. इन 1 मार्क्स क्वेश्चन इट इज सफिशिएंट टू मेक अ फिगर एंड राइट द मेजरमेंट्स, एंड it is sufficient for 1 marks question to understand for the checker. Then next is fourth, two polygons. Okay, polygons I think you know, of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal with, okay, and their corresponding sides are proportional, already given, and already this is द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी. ठीक है, तो इसको आपको याद भी रखना है और इसको आपको बार बार यूज भी करना है. ओके, देन वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर. फर्स्ट इज सिमिलर फिगर्स, नेक्स्ट इज नॉन सिमिलर फिगर्स. फॉर दी सिमिलर फिगर्स, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, आप दे सकते हो सर्कल, दे सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल, दे सकते हो ओके, स्क्वायर्स दे सकते हो. दीज आर दी सिमिलर फिगर्स. अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसको डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, देन नॉन सिमिलर फिगर्स. ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर्स में आपका रेक्टेंगल आ सकता है इफ द लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर वेरिंग इन द करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल्स. आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आ सकते हैं, स्केलेन ट्राइंगल्स आ सकते हैं, ओके, पेंटागन, हेक्सागन सब आ सकते हैं. सिर्फ ये है कि उनकी साइड्स वेरी करना चाहिए. ठीक है, एंगल इक्वल फिर भी हो सकते हैं लेकिन साइड्स वेरी हो सकते हैं, मतलब आपको बताना है. और एंगल इक्वल ना ही हो तो और भी अच्छी बात है. ओके, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. स्टेट वेदर द फॉलोइंग quadrilaterals आर सिमिलर और नॉट. ओके, as you can see in that sides are given proportional, PQRS. okay, first figure, next is ABCD. okay, PQRS if you observe, this is what, दिस इज अ रोम्बस. ठीक है, ये एक रोम्बस है. एंड नेक्स्ट आप देखें तो ये आपको एक स्क्वायर मिल रहा है.
तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है. Can we say that all squares are rhombus, or can we say all rhombus are these squares? ठीक है, दिमाग लगाते हैं. पैरेललोग्राम, थोड़ा सा आपको पीछे आना पड़ेगा, हमारी जो भी हमने पुरानी क्लासेस पढ़ी हुई हैं उनमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. 8th क्लास से, ठीक, 8th 9th क्लासेस से ये कंसेप्ट है. पैरेललोग्राम इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी. ओके, फर्स्ट द रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल. ठीक है, ये रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, या रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर जो भी लिखना चाहें, ठीक है. तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर. तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम तो हैं, ठीक है. पैरेललोग्राम मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके, तो ये जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो यहाँ है. लेकिन अब बात होती है कि इनमें सिमिलैरिटी और क्या है और डिफरेंस क्या है. तो सिमिलैरिटी ये है, ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल. ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल होता है और ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल. ठीक है, ये तो सिमिलैरिटी हो गई. नेक्स्ट है कि इनमें डिफरेंस क्या है. ओके, तो डिफरेंस इज, फर्स्ट डिफरेंस और फर्स्ट एंड ओनली डिफरेंस, ठीक है, जो कि एक ही डिफरेंस है, that the angles in square are of 90 degree each, but in rhombus the angles are not equal. Opposite angles are equal as it is happening in the parallelogram, and it is a kind of parallelogram, but all angles are not equal. Opposite angles are equal. The sum of adjacent angles will be 180 degree, as it is the property of the parallelogram, so it will be there. But the only difference is the all angles in square are 90 degree each, but in the rhombus it is not. Okay, so that's why here you can see sides are proportional, 1.5:3, it will be 1/2, or we can say 1:2. So sides are proportional. Second point is varied, but first point, that all angles should be equal or corresponding angle should be equal, it is not there. That's why you will write that the polygon, or you can write the name, okay, that rhombus PQRS is not similar to the figure ABCD, or you can write square ABCD, and the reason is sides are proportional but all angles are not equal. And that's why अगेन आई एम सेइंग कि जो भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये इसमें सिंपल आपको यस नो करके, या बहुत सिंपल सा दिया हुआ है कि आपको एक आंसर पिकअप करना है, सिर्फ यस नो बोलना है. बट वंस अगेन आई टेल यू कि आपको अलोंग विद द आंसर रीजन कंपल्सरी लिखना है. ठीक है, कंपल्सरी फॉर यू, इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू राइट रीजन अलोंग विद द आंसर, सो दैट विल बी क्लियर फॉर द चेकर, इवन फॉर यू टू. ठीक है, आप इसको दोबारा जब पढ़ रहे होंगे तो आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी, आपको वो लाइन पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि आपने ऐसा क्यों लिखा हुआ है. ओके, सो दैट्स व्हाई I'm telling you to write reason, and I think it's more than sufficient regarding exercise 6.1. We'll move towards exercise 6.2, but it is your responsibility. Before I should start, you should see the exercise. You should just check the exercise once. The kind of questions are there in the exercise. Okay, the kind of theorem we are using there. So you should go through that once, and then it will be quite easy for you, or means a kind of ईजीनेस यू कैन फील. ठीक है, आपको थोड़ा तो अच्छा लगेगा. ओके, कि आप जो है कुछ इसके बारे में जानते हैं. तो आप जरा सा बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, इसको देख लें, वीडियो देख लें, पढ़ लें. ठीक है, बुक से पढ़ लें, एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.2. सो इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.